Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are fine. Today our topic of discussion is present simple tense. I am uploading these videos for those students who are starting from very beginning. Those students who are very beginners and they want to appear in competitive exams but they are starting from right now. So this tenses will be helpful for them to start their grammar practice. I have uploaded 3 videos on present to be, past to be and future to be before. This is my fourth video on tenses. Present simple tense we will discuss on this one. See, it's written on the screen that first we will use subject, then verb of first form, then we use object. Subject means doer of an action, verb means an action, object means bearer of an action. जो काम का करने वाला होगा उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, और वर्ब यानी जो काम, और ऑब्जेक्ट जो काम को बियर करे तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. आई इग्नोर हर. आई यहाँ पे इग्नोर कौन कर रहा है? आई यानी काम करने वाला कौन सा है? आई. तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. इग्नोर जो है वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और हर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा. आपको ये याद रखना है, जब भी आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम आए तो आप वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाएंगे. और उसके अलावा जब ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो उसके साथ आप वर्ब के साथ एस और ई एस लगा सकते हैं. तो आई इग्नोर हर इज अफर्मेटिव सेंटेंस. Students yawn in the class. This is again an affirmative sentence. We comb. This is also an affirmative sentence of present simple. They pay attention to their studies. This is also a present simple tense. You get angry for nothing. Get angry means नाराज होना. For nothing means ख्वामखा. इसको फॉर नथिंग को हम नीली विली भी सेकंड वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ही आर शी सपोर्ट्स हर पेरेंट्स. सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, एस सपोर्ट के साथ एस नहीं लगाया. तो ही और शी जब भी आएगा, मैंने जैसे कि पहले बताया, ही और शी और सिंगुलर वर्ब जब भी आएगा, सब्जेक्ट जब भी आएगा तो हम उसके साथ वर्ब के साथ एस लगाएंगे. ही आर शी सपोर्ट्स हर पेरेंट्स financially. Okay, so these are the affirmative sentences. We are moving towards the negative sentences. See, these are the negative sentences. What we do in the negative sentence that's written on the screen: I, we, you, they with plural names we use do not, and he, she, it with singular name we use does not. For example, number first sentence, they do not make delay. Make delay means देर करना. Number second, natural beauty of Kashmir does not attract us. यहाँ पे सॉरी मैंने attracts लिखा है. does not जब भी आएगा तो आप verb के साथ s और es नहीं लगाएंगे. ओके, यहाँ पे does not मैंने लिखा है तो attract आएगा, attracts नहीं. यहाँ पे सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है. ये the poor do not lead simple life. यहाँ the poor is a plural. poors नहीं होता. जो पुअर है वो सिंगुलर है, द पुअर प्लूरल है, सिमिलर रिच सिंगुलर है और द रिच प्लूरल है. तो पुअर्स कभी भी आप ना लगाएं. द पुअर जो है वो प्लूरल है तो इसके साथ हम डू नॉट लगाएंगे. डू नॉट लीड सिंपल लाइफ. यू डू नॉट ट्रीट मी वेल. ट्रीट मीन्स बिहेव करना. ओके, ही आर शी डज नॉट परफॉर्म ड्यूटी रेगुलरली. परफॉर्म ड्यूटी मीन्स फर्ज अदा करना. ओके, तो ही और शी के साथ आप डज नॉट लगाएंगे. वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. लेट्स सी. This is our interrogative sentences. What we do in interrogative sentences, we use do or does before the subject, then subject, then the verb of first form, then object or extension. What is extension? Extension means something which comes out after the object. Enlargement. Enlargement of object or enlargement of verb and object is known as an extension or enlargement. So do
farmers, grow crops. Okay, यहाँ पे जो farmers है वो plural है, that's why we use do we put on socks? Again we जो है हमारा plural है, we use do they seek knowledge? Seek knowledge means तालीम हासिल करना. Does mason repair the building? Repair the building means building की मरम्मत करना. Mason means जो जो राजा होता है उसको हम मेसन बोलते हैं. Does she waste her time in futile activities? मैंने water लिख लिया है, it's my mistake, sorry for that one. Does she waste होगा यहाँ पे. Does she waste her time in futile activities? Waste means ज़ाया करना. Her time in futile activities. Futile activities means जो है बेकार कामों में, बेकार एक्टिविटीज़ में. So this was the video about the present simple tense of affirmative, negative and interrogative sentences. Again, see the words that has been used in the tenses like grow crops, seek knowledge, repair the building, futile activities, waste her time. Now these are the vocabulary, these are the basic words. You need to remember those words and use in your speaking skills as well as in your writing skills. You need to improve your speaking as well as creative writing skills. If you are implementing and applying these words and learning these words, it will help you a lot in future while when will you appear in competitive exams or in any written exam of SPSC, FPSC or PCS or ASI for the test of ASI. These will help you a lot. Beside this one, these sentences and these vocabulary will also help you to identify the errors within the sentence. So don't underestimate this simple things. Sometimes a simple mistake can become a blunder. So if you like my video, don't forget to subscribe my channel. Okay, and inshallah we will meet to another video and we will discuss on past simple tense. Thank you so much.